Hello students, myself Tamanna. Today I'll explain you a chapter from grade 6 Gulmohar book, Down the Rabbit Hole. Children, this is an extract which has been taken from Alice's Adventures in Wonderland. It is a children's book, a very famous children's book, Alice's Adventure in Wonderland, and is written by Lewis Carroll. ये एक एक्सट्रैक्ट है जो इस बुक में से लिया हुआ है. दिस बुक इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. आई वुड लाइक यू ऑल टू रीड द बुक. इट विल बी वेरी interesting for all of you to read. Okay children, so come on, let's come to the story. It is the story. Now I will tell you first, this story is about a young girl whose name is Alice. See, this is a young girl whose name is Alice. Okay, so she was sitting under a tree when she saw a rabbit, a strange rabbit running. Okay, she went after the rabbit. She was very curious to see the rabbit. Why? Because the rabbit was wearing a waistcoat and a watch. She went after the rabbit and falls through a rabbit hole. She reaches a fantasy world where she finds peculiar creatures. एक fantasy, एक imagination, world of imagination में वो पहुंच जाती है और क्या मिलते हैं उसे वहाँ पर? बहुत ही स्ट्रेंज क्रीचर्स मिलते हैं उसे, बहुत सारे एडवेंचर्स मिलते हैं वहाँ पर. सो यू विल रीड अबाउट दिस स्टोरी, रीड अबाउट द एडवेंचर्स दैट एलिस हैड, एंड देन it will be very very interesting to read. So come on, let's come to the story. Alice's Adventure in Wonderland is one of the famous children's books ever written. It is about the adventure of a 7-year-old girl called Alice in a strange land filled with strange characters such as the Queen of Hearts, Tweedledum and Tweedledee, the Cheshire Cat, Mock Turtle, the Mad Hatter, the Rabbit with a White Coat and a Pocket Watch, and many more. Each chapter of the book presents a dreamlike situation involving Alice and these unusual characters. Now Alice, जब Alice rabbit hole के थ्रू नीचे जाकर गिरती है तो उसे बहुत स्ट्रेंज क्रीचर्स मिलते हैं वहाँ पर. ये सब क्रीचर्स हैं ना जो उसे वहाँ पर मिलते हैं, और बहुत ही डिफरेंट तरह के एडवेंचर्स होते हैं उसके साथ. Many unusual things happen when Alice reaches there. Okay, we'll read about these adventures. Down the Rabbit Hole marks the beginning of Alice's adventures. Now this story, this extract, ये शुरू करता है कैसे Alice उस adventure land में पहुँचती है. Okay, driven by curiosity about an unusual rabbit, Alice goes down a rabbit hole and finds herself in a land of fantasy. Now Alice was very curious about the unusual rabbit. Why the rabbit was unusual? Because it was wearing a waistcoat. Have you ever seen a rabbit wearing a waistcoat? No. The rabbit was wearing a waistcoat and he was wearing a watch. And so it was a very unusual rabbit. Alice goes after the rabbit and falls through a tunnel and reaches a place where she meets many unusual characters and finds many new adventures. Let us read the story. It's a very interesting story. There was nothing so remarkable about the white rabbit saying, oh dear, I shall be too late. Now, the rabbit was saying, oh dear, I shall be too late. But this was not unusual, है ना? Normally, rabbit बोल रहा था, oh dear, I shall be too late. And hurrying on. But when Alice, who was sitting beneath a tree with her sister and feeling bored, saw the rabbit take a watch out of his waistcoat pocket and look at it, flashed across her mind that she had never before seen a rabbit with either.
पहले तो उसे रैबिट को देखकर कुछ भी अनयूजुअल नहीं दिखा, है ना, अनयूजुअल नहीं लगा. बट देन सडनली शी सॉ that the rabbit was wearing a waistcoat and was taking out a watch from the pocket. She was very curious to know about the rabbit, because have you ever thought of a rabbit wearing a waistcoat? No, she had also never seen a rabbit wearing a waistcoat. So when she saw such unusual rabbit, she was very, very curious. She wanted to know something more about the rabbit. Okay. She ran across the field after it. अब वो रैबिट के पीछे पीछे भागने लग गई एलिस, एंड वॉज जस्ट इन टाइम टू सी इट पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल अंडर द हेज. और क्या हुआ, रैबिट एक बड़े से रैबिट होल के अंदर पॉप कर गया हेज के नीचे. रन करते करते एलिस वॉज रनिंग आफ्टर द रैबिट, एंड रन करते करते क्या हुआ, एलिस भी उस होल के रैबिट होल के अंदर गिर गई. ओके. In another moment, down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. Ab, what happened? In another moment, Alice went down the rabbit hole. She not even thought, she did not even think how she would get out of the hole again. वो इतनी क्यूरियस थी रैबिट के पीछे पीछे भागने में कि उसने ये भी नहीं सोचा कि वो बाहर कैसे आएगी. She fell slowly through what seemed like a bottomless tunnel, but finally landed on a heap of sticks and dry leaves. अब वो गिरती जा रही थी रैबिट होल से. It was like a big tunnel. जैसे एक बहुत बड़ा टनल होता है ना, bottomless tunnel means जिसका कोई बॉटम ही नहीं है. तो वो उस टनल के नीचे 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 जाते जाते फाइनली कहाँ गिर गई, एक बड़ा सा हीप था स्टिक्स का और ड्राई लीव्स का, उसके ऊपर जाकर एलिस गिर गई. एलिस वॉज नॉट अ बिट हर्ट and she jumped up onto her feet. She was not hurt, though she fell down so deep into the tunnel. She was not hurt. उसको बिल्कुल चोट नहीं लगी और वो एकदम से अपने पैरों पे खड़ी हो गई. She looked up, but it was all dark overhead. अब उसने इधर उधर देखा. Like, have you ever seen a tunnel? कभी भी आप कहीं जाते हैं बाहर, अब घूमते हैं तो देर इज़ अ टनल, यू नो, व्हेन यू गो टू देहरादून देर इज़ अ टनल ओवर देर. जब हम टनल के अंदर जाते हैं तो बहुत डार्क होता है ना. वी फील लाइक शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग इनसाइड द टनल. सो देर वॉज वेरी डार्क इनसाइड द टनल. व्हेन शी स्टूड शी सॉ हियर एंड देयर, बट देर वॉज डार्क ओवरहेड. उसके सिर के ऊपर सभी डार्क था. बिफोर हर वॉज अनदर लॉन्ग पैसेज एंड द वाइट रैबिट वॉज स्टिल इनसाइड, हरिंग डाउन इट. अब एक और लंबा सा पैसेज था जिसमें वो वाइट रैबिट भाग भाग के जा रहा था. एलिस कुड सी द रैबिट रशिंग थ्रू इट. देयर वॉज नॉट अ मोमेंट टू बी लॉस्ट. देयर वॉज नॉट अ मोमेंट टू बी लॉस्ट मीन्स एलिस कोई भी मोमेंट लूज करना नहीं चाहती थी. शी वॉन्टेड टू गो आफ्टर द रैबिट